So we are talking about the okay. Thank you, Rishad. Rishad, thank you. Okay, and yes, group leaders, you can ask to your team members. Okay, and if you will find any difficulty regarding this subject, so you can ask me. Okay, group leaders can talk with their group members. जैसे अभी इरशाद ने बताया कि all the members of his team can understand the DBMS. Okay, very good. If अगर कोई doubt भी है, तो you can ask me. Okay, because students जो आपने का जो मेंटरिंग ग्रुप जो है दैट इज ओनली फॉर दैट पर्पस। ओके, आपको इसलिए है कि अगर कोई डाउट्स है तो स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स इजीली मेंबर्स को मतलब लीडर्स को बता सके। ओके, तो यू कैन आस्क ग्रुप लीडर्स टू योर ग्रुप मेंबर्स के whether they can understand or not. If any difficulty are there regarding these subjects, so you can tell me. Okay, like जैसे इरशाद ने भी किया, very good इरशाद। okay, thank you। चलो, now yes, there are three methods, okay, used to back up the data in secondary memory, okay, so that it can be recovered if there is any failure। okay, अगर डेटा सेकेंडरी डिवाइस कुछ फेल हो रहा है तो कौन सा मेथड है वी कैन यूज सो दैट कि हम लोग हमारा डेटा जो है वो रिकवर कर सके। ओके, तो फर्स्ट है कि रिमोट बैकअप। ओके, द फर्स्ट मेथड इज दैट द रिमोट बैकअप। ओके, database copy is created and stored in the remote network। okay, database copy is created and stored in the remote network, मतलब जो भी database हमने बना के रखा है, ठीक है, सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर है, तो जनरली व्हाट वी आर थिंकिंग कि यस डी ड्राइव में स्टोर है तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, इट इज सेफ। बट मे बी इन केस आपका सेकेंडरी डिवाइस या तो हार्ड डिस्क क्रैश हो गया तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो व्हाट यू विल डू, क्या करोगे? तो उसके लिए फॉर द सेफर साइड व्हाट यू विल डू कि डेटाबेस जो आपका सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर है उसको आप एक रिमोट प्लेस में, रिमोट बैकअप, ओके, मतलब कोई और प्लेस में आप उसको स्टोर करके रखो इन रिमोट नेटवर्क, यू कैन से आप उसमें स्टोर करके रखोगे एंड टाइम टू टाइम वो डेटाबेस को क्या करते जाओगे, अपडेट करते जाओगे। ओके, दिस डेटाबेस इज periodically updated with the current database so that it will be synchronized with data and other details। ओके, आपको व्हाट यू हैव टू डू कि जो आपने बैकअप लेके रखा है और कोई सिस्टम पे, ठीक है, आपके सिस्टम पे तो है प्लस और कोई सिस्टम में या तो नेटवर्क में बैकअप लेके रखा है रिमोट नेटवर्क में, तो आपको उसको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज एक बार आपने लेके रख दिया बट आप उसके ऊपर काम तो करे हो ना आपको ओरिजिनल डेटाबेस पे, तो ओरिजिनल डेटाबेस में व्हाट यू आर वर्किंग, जो भी काम करो उसको आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा वो रिमोट डेटाबेस के साथ। ओके, दिस रिमोट डेटाबेस कैन बी अपडेटेड मैन्युअली कॉल्ड ऑफलाइन बैकअप भी यू कैन कर सकते हो। इट कैन बी बैकअप ऑनलाइन वेयर द डेटा इज अपडेटेड एट द करंट एंड रिमोट डेटाबेस साइमल्टेनियसली, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है, तो आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से यू कैन अपडेट योर रिमोट database। In this case, as soon as there is a failure of current database, the system automatically switches to the remote database। अगर आपका ओरिजिनल डेटाबेस कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फेल हो गया तो आप ऑटोमेटिकली कहाँ पे चले जाओगे, रिमोट डेटाबेस पे, मतलब यू कैन गेट योर डेटा फ्रॉम द रिमोट डेटाबेस। ओके, रिमोट मतलब क्या, अनदर सिस्टम में स्टोर करके रखना या तो नेटवर्क में स्टोर करके रखना, अनदर प्लेस में नेटवर्क में स्टोर करके रखना। तो क्या हो जाएगा, अगर आपके सिस्टम में से डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया सेकेंडरी डिवाइस में तो आप उसको बैकअप ले सकते हो। So that is a one option की remote backup। Second method क्या है, database is copied to memory devices like magnetic tapes and kept at secured place। okay, for example पेन ड्राइव में या तो डीवीडी में या तो कोई और मैग्नेटिक टेप्स सेकेंडरी डिवाइसेस में आप उसको कॉपी करके रखो एंड सेफ प्लेस पे रख दो। दिस इज द सेकंड वे। ओके, एंड द थर्ड वे क्या है, at the database grow it is overhead to backup whole database, hence only the log files are backed up at regular intervals। and one more way है कि आप उसको log files create कर दो, log files create कर दो। okay, this log files will save all the information about the transaction being made। okay, so seeing these log files database can be recovered। the first method क्या है कि remote network में remote backup करके रख दो। second क्या है, आप उसको multiple या तो सेकेंडरी डिवाइस या तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला मैग्नेटिक टेप्स या तो पेन ड्राइव या तो डीवीडी में लेके रखो एंड सिक्योर प्लेस पे उसको रख दो, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज लॉग फाइल्स, यू कैन क्रिएट द लॉग फाइल्स। ओके,
एंड दिस लॉग फाइल्स को आपको क्या करता रहना पड़ेगा, अपडेट करता रहेगा. दिस लॉग फाइल्स में ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन बीइंग मेड. So seeing these log files, database can be recovered. Okay, in this method, log files are backup at regular intervals and database is backup once in a week. Okay, so how to create log files हम लोग देखेंगे. Okay, यहाँ पे है in our subject how to create log files. Okay, log based recovery. This is a log base, but we will cover this topic in the next lecture because today so many students are absent. Only 10 students are there. Okay. तो ये तो हो गया बैकअप. ओके, physical and logical data backup. You know what is physical and logical data backups. Okay, the physical data backup includes physical files like data files, log files, control files, redo, undo, log, etc. They are foundation of the recovery mechanism in the database as they provide the minutes detail about the transaction modification to the database. And what is logical? Logical मतलब क्या, tables, views, procedure, functions, all are the logical. Okay, आप जो टेबल्स क्रिएट करे हो दैट इज लॉजिकल बैकअप. टेबल्स का डेटा स्टोर करके रखना, व्यू, प्रोसीजर, फंक्शन जो भी क्रिएट करे हो वो डेटा स्टोर करके रखना, दैट इज अ लॉजिकल बैकअप. ओके, लॉजिकल डेटा बैकअप अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू रिकवर द डेटाबेस एज दे प्रोवाइड ओनली द स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन. आपको फिजिकल भी लेना पड़ेगा, मतलब जो लॉजिकल स्कीम एंड फिजिकल स्कीम जब हम लोग पढ़े, ठीक है, वो दोनों इंफॉर्मेशन वी हैव टू स्टोर. Okay, दोनों information we have to backup. We have to take backup for both the information, logical schema and physical schema. Okay, the physical data backup actually provide the minute detail about the database and is very much important for recovery. Okay, and logical मतलब क्या, tables, views, procedures जो हम लोग create करें, table पे काम करें. Logical schema and physical schema, दोनों schema का information we have to store as a backup. Clear? Yes. And what is recovery, that we will continue in the next lecture. Okay, because attendance is very less है. Okay, why I don't know, only 10 students are there. Yes, कुछ है क्या, आज कॉलेज में कुछ बुलाया नहीं है ना किसी को? Why the attendance is very less? Yes, Irshad, can you say why? ओके, फीस के लिए. ओके, फीस पे करने के लिए गए. ओके 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 ओके, नो इश्यू, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, अगेन वी विल लर्न ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, अगेन मैं रिपीट करूंगी, अब कुछ समझ में नहीं आया तो अगेन आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, नो इश्यू. ओके, एंड ये सिलेबस मुझे आपको दिखाना है. वन मोर थिंग्स. ओके, यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट. यूनिट 2 में जिस कैलकुलस बाकी है, ठीक है, स्मॉल टॉपिक है, 1 लेक्चर का है, दैट आई विल कंप्लीट. कंस्टेंट एंड व्यूज वी हैव कंप्लीट. इसमें भी ट्रिगर्स बाकी है. ओके, इसमें ट्रिगर्स इज रिमेनिंग, वो भी आई विल एक्सप्लेन. एक्चुअली ट्रिगर्स का प्रैक्टिकल्स है ना, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, वो नहीं उसमें हो रहा है मेरे सिस्टम में. आई विल चेक एंड एक्सप्लेन. ठीक है, इसका नोट्स वगैरह इस रेडी है, जस्ट उसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. I will sort out it and I will explain. Okay, transaction management all fully theory है that we have covered. Asset properties, reliability, block based protocols. Okay, we have covered. इसमें कुछ है नहीं, theory है. And yes, ये recovery management अभी हमारा चालू है. ठीक है, database recovery management currently we have learning this one. ठीक है, and उसके बाद एक यूनिट बाकी है PLSQL. Okay, PLSQL we have to learn. ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस जो है वो यूनिट 4 तक खत्म हो गया, ओनली 2 टॉपिक्स बाकी है. अदरवाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर में हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा. देन वी विल स्टार्ट आफ्टर द गणपति वैकेशन, वी विल स्टार्ट द PLSQL. ओके, तो एक ही यूनिट बाकी है. एंड प्रैक्टिकल्स जो है दैट क्वेरीज मैंने आपको बोला है, द क्वेरीज यू हैव टू राइट. यस, यूनिट 3 तक इन द आपका इंटरनल एग्जाम में यूनिट 3 तक होगा. ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 इंटरनल एग्जाम में. ठीक है, इंटरनल एग्जाम का सिलेबस जो है दैट यूनिट 1, 2, 3. ओके, रीड इन दी वैकेशन. अभी वैकेशन है, 5 डेज का गणपति वैकेशन है, तो प्लीज रीड ऑल द कांसेप्ट्स. ओके, इफ यू विल फाइंड एनी डाउट यू विल सॉर्ट आउट आफ्टर द वैकेशन. ओके, गणपति वैकेशन क्लियर. नाउ एनीवन हैज एनी डाउट? अदरवाइज आई एम एंडिंग द लेक्चर. May I end this lecture, students? No doubt, ma'am. Okay, okay, okay. Sure. Bye.